Today our hero, Nashin Badar. What a beautiful person. She's a sound banker and my darling friend. Hello there, this is Farah. This is Faiza. Welcome back. आज हमारे पास बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक है जो जिस तरह से हम हमेशा कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हम ओपन नहीं बोल पाते आज हम उसी को एड्रेस कर रहे हैं और उसके लिए हमारे साथ है हमारी हीरो नौशीन बदर. How are you guys? And thank you for having me over. Thank you so much for coming. Thank you so much for agreeing to it because बहुत सारे लोग हैं जो आज का एपिसोड है 40 and not married. It's not easy to talk about. Yeah. Where did you get the courage, Nashin? Thanks to you for giving out that energy, that positive energy that always made me feel better about myself. So it's definitely that. Mm-hmm. And also maybe with time I've started accepting jo hai so hai. So, like we say, it is what it is. So I can't really, things are not in my control. So it's better to accept and it's better to talk about it rather than feeling stereotypical or feeling that it's a taboo or something. Yeah. You're not married. It's not in your control at times. Basically, Nashin, 40s are the new 30s. Yes, totally. I do feel old. My bones do tell me that. But then it's okay. Say that. But then it's okay. Being single is your choice or is by chance? I'll say it's by chance, not by choice, really, because the circumstances that I have faced in my the lifetime that I've around 4 decades that I have passed, and somewhat it led to what it is right now. But because even though I've accepted it, but there are people who do not accept a person who has crossed her 30s and is single and is independent. So they would want the person to be, it's basically not easy to accept a woman independent. So that I guess that's the problem where it starts. And when as you cross your 30s, then you cross your 35. That's when a lot of things change in your body. So the mindset of the people also change. I would want to use the term biological clock that I keep on hearing. So that's what has led me here, and with time I only feel that this is what Allah has planned for me. So I would just accept it the way it is, and why not just live my life happily rather than feeling bad about it. Yeah. तो फिर अब फैमिली की तरफ से कैसा सपोर्ट था? अगर कहते हैं बेटा क्या कर रही हो? No, it was usually it used to be like that. To be very honest, in my late 20s and my early 30s. ये होता था. My mom was alive when I was in my early 30s and she was trying for me. So I've been through that trolley tray process. I've been through all the processes that all the women go. So it's nothing really special that I've gone through. After she passed away, so it was basically we as a family as a whole went through a lot. So now my family, they just want to see me happy the way I am. So there's no pressure कि शादी करेगी तो खुश रहेगी. They're just happy that I'm happy the way I am. If I am happy that way, that's it. So Nashin, तुम्हें क्या लगता है कि जो pressure you said कि तुम्हारी अम्मी जब तक alive थी तब ज़्यादा pressure था. Do you think it's only mothers in the family who puts more pressure? Not really. I would say my father is a very understanding person. He has that mindset. So he doesn't really care about what the world thinks about his daughter being unmarried and earning and running the show. But it's just that that's my father. Not all fathers are like that. I've seen my friends struggling with their fathers because they are pressurizing them. So it totally depends on person to person. In some families it's the mothers, in some families the fathers. In my family it was my mother who was more concerned. But yeah, it's not that my father is not concerned. It's just that he has accepted the situation the way it is. Yeah, fathers probably is different because जो है during my time of being single कि मुझे उस पे याद आता है कि अम्मी मुझे हमेशा कहती थी कि कोई भी मिल जाए बस तुम शादी कर लो. तो मेरा हमेशा जवाब होता था कि अम्मी क्या सड़क पे खड़ी हो जाओ, बोलो कि आप मुझसे शादी करो. I know that's
like a very bad thing to say. A lot of people just come up and say that to you, you know. So once I was just having a conversation with one of my friends, and she just goes on and saying that, you know, I have to given up trying. Like, just keep trying. And I was like, Yes. trying what? Like, what should I do? Like, do what? सारा काम और then focus Exactly. is So she went blank for 2 seconds, and she said, you know what? You're right. It was such a stupid question to say, that keep trying and keep looking for guys. Is this what we really are for? Like, my focus should be on my career, to make money, think about my retirement, and, you know, everything will flow in. But I don't want to put my focus in, you know, looking around and searching for guys. I think there's more to world, there's more to life. Yeah. Don't you think that's don't you think that's not a correct approach? Because trying is for studies, trying is for career, trying is for getting becoming a better person. तुम कोशिश नहीं कर रही हो. I mean, क्या करूँ मैं? क्या करूँ और किसी के पास जाऊँ? No one has an advice to give. बस कोशिश करो. I mean, क्या कोशिश करूँ? And in my situation, I've accepted that I'm 40 and it's not going to be the conventional way. So it's better not to think that way. तो कभी ऐसा फील हुआ है कि अब बहुत सारे लोग अब दोबारा से ट्रेंड हो गया कि लोगों जल्दी 20s में लोगों की शादी हो रही है, तो ये फील एनी डिफरेंस और कैसा लगता है मतलब इस एरा में कि अब हम तो डेट हो गए हैं. Actually, it's quite scary to think about it at that point in time when, you know, with your cousins and of course Faiza's daughter. I was telling people that, you know, my friend's daughter is getting married, and everyone would just raise their eyebrows and like, तुम्हारी दोस्त की बेटी? I was like, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है मेरी दोस्त, but yeah, she got married at a very young age. So of course her daughter has to be in her early 20s. So yeah, my cousins and everyone, they're getting married at a young age. I guess it's totally fine. I've never been in anti-marriage or anything. It's if that's what makes them happy, then that's about it. But it's just that they should complete their studies first. At least they should complete their bachelor's, because you don't know what life has to bring to you. तो बेहतर यही है कि अपनी पढ़ाई कर लें, फिर कर लें शादी. अगर अच्छा मिल जाता है तो कर लें. Because then फिर लोग ये कहते रहेंगे तुम कोशिश नहीं कर रही हो. तो जो है वैसे तो अब आकर देखा जाए तो काफी हद तक चीजें हमारे एरा से और अब तक में चेंज हो गई हैं. हमारे वाले टाइम पर तो सब यही था कि बस पढ़ाई कर लो, और जो भी पढ़ाई ये नहीं कि वो स्पेशलाइज. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल जनरल पब्लिक. देयर वर फैमिलीज जो उस टाइम पे भी बहुत फोकस थी कि लॉ करना है, कुछ और करना है, बट देन इट वाज द बैकग्राउंड, क्योंकि उस फैमिली में ही बहुत सारे अचीवर्स थे, और बहुत सारी ऐसी फैमिली थी जिस तरह से हम लोग भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, कि जिसमें द ओनली फोकस वाज कि बस ग्रेजुएशन कर लो और उसके बाद शादी हो जाए, और उसके बाद ये आपको मियाँ के घर से मल के निकलना. The trend has started again. Actually, what I think is because this is why people, like, you know, I see people around getting married at very young ages, because वो trend फिर से शुरू हो गया. I guess हमारी जो generation थी उसमें फिर भी था. My mother, उनको दिमाग में बस एक चीज ये थी कि बच्चियाँ पढ़ लें, थोड़ा सा experience ले लें, फिर शादी कर लें. Because the kind of things that she faced in life, she always, उनको ये लगता था कि यार अगर मैं थोड़ा पढ़ी लिखी होती तो मैं शायद ज़्यादा कुछ कमा लेती और अपनी बच्चों की ज़्यादा ज़िंदगी बेहतर कर सकती थी. तो she always had that thing in mind. So my elder sister, she's a doctor. She did her practice and then she got married. Then I am a banker myself and I studied and completed math studies. But yeah, the things just went a little haywire at my time, but that's totally okay. But उनका perspective यही था कि थोड़ा सा पढ़ लें, कर लें, उसके बाद शादी कर लें. But right now, people are like लड़का अच्छा कमा रहा है, उसके बाप के पास अच्छा पैसा है, बच्ची की शादी कर लो, बस बैचलर्स कर लो. एक्चुअली बच्चे खुद भी इंटरेस्टेड होते हैं कि मैं बस मैं शादी कर लेती हूं तब खतरा हो जाएगा. Coming back to that, वो उनकी choice है. हर किसी की अपनी choices हैं. So you're a pretty one. So over the period of time, I'm sure you got the chances. Yeah. That's one thing, and the other one कि अब आके तुम्हारे पास क्या options हैं? Let's say we are generally talking about कि you're single, you're pretty, holding a good position, making a good money, running your own house. There is nothing really missing. But what are the options out there? कि अब अगर आगे कोई मैच मिलता है तो वो क्या होगा, किस कैटेगरी में होगा? Will it be younger to you? Will it be older than you? Will it be divorced, widower? What are the options? Basically, you have listed down the options that I actually have. यही options है, and to be very, अगर practically सोचें
तो यही ऑप्शंस हो सकते हैं लाइक एट 40 आपके पास और क्या हो सकता है बिकॉज यूजुअली अगर आप कन्वेंशनल लाइफ में जा रहे हैं सो यूजुअली पीपल डू गेट मैरिड एट लेट 20 और अर्ली 30s में शादियां भी कर लेते हैं बच्चे भी पैदा हो जाते हैं देन सो ऑन एंड सो फोर्थ यू नो दे बिकम विडोअर्स और डिवोर्स हो जाती है the younger ones I feel that they wants if they want to approach they have this thing in mind that you know what I will bring to the plate and the only thing that I can bring to the plate is what I'm earning so that becomes a little turn off for me that you know I mean this is what you do शादी करनी है तो मतलब इसी तो फिर फायदा क्या अगर मैं if I'm bringing the finances to the plate then what's the point of getting married? I would rather keep that finances for myself and you know save it for my future. True, किसी को बिठा के खिलाना है तो सब जवाब क्यों दें? Exactly. क्यों हो रहा है ऐसा क्यों? Because if you do it for your immediate family, your siblings, your parents, at least वो आपको पलट के दुआ दे देते हैं. I think I don't expect that from people. But a person who's getting married to me because what I'm earning, I don't think so. It's going to come out that way. अच्छा और when it comes to divorces, that also with my observation कि जिसमें अब आकर जो 30s वाले हैं दे आर बोथ पार्टीज गर्ल्स एंड बॉयज दे आर फाइनेंशियल सिक्योर दे आर डूइंग समथिंग दे हैव मोर एक्सपोजर तो अगर उन्होंने डिसीजन लेना होता है वो दे टेक द डिसीजन एंड दे इंस्टेड ऑफ चीटिंग और इंस्टेड ऑफ डूइंग बैड थिंग दे टेक डिवोर्स बट वो जो 40 प्लस और 50 प्लस वाले हैं ना जिसमें वो कैटेगरी फिट होती है कि जिसमें थोड़ा सा ओल्डर हो अंडरस्टैंडिंग हो अब दे डोंट रियली दे आर नॉट डिवोर्स्ड दे बिहेव दे आर डिवोर्स्ड बट दे आर नॉट Yeah, that's the worst part. अब उस वाले केस के अंदर है कि जब एक तो चलो वही वाली बात है पहले डिवोर्स नहीं है और अगर कोई डिवोर्स और विडोअर है भी तो उसके पास ऑप्शन है कि वो 20s प्लस के पास जाए और 30 के पास जाए तो And you know, this is one thing that I want to talk about here is that people in 40s, like guys in early 40s and late 30s, जो मेरे एज सर्कल के हैं उनको early 30s की और late 20s की you know they want to get married to such girls yes. and the girls do get married to them because of course they are financially stable and in a much better position than the people of their age circle so I guess इस वजह से भी काफी opportunities हमारी कम होती चली जाती है because they get the younger a lot but that's how it is कभी हो सकता है ना कि सेम एज की हो या बड़ी भी हो सकती है it doesn't matter आजकल तो इतनी ज्यादा एग्जांपल्स मिलती हैं हमें पूरे उसमें कि कोई बड़ी भी लड़की से शादी हो रही है छोटा लड़का कर रहा है but then वो ज्यादातर वो वही होता है it involves financials of the female what the female is bringing to the plate because to be very honest in Pakistan marriage is getting married having kids and you know building up a whole family so if a girl is older there are a lot of problems that are attached to it that's where you get stuck so but that's how our culture is so this is what I want to add here that you know usually people tell me that okay so fine if you have decided that you're going to be single then why not just move abroad because in Pakistan it's going to be very difficult for you to survive I really don't know what to say at that point in time because इस उम्र में तो मुझे immigration भी करनी पड़ती है so I really don't know how to take that but I can't even take that advice but यही survive करना है so yeah but मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल है सोसाइटी में ये चीज़ एक्सेप्ट करना बट आई एम वर्किंग ऑन इट एंड with time a lot of people in my own family my cousins my you know the immediate nanyal and dadyal they do आते जाते कभी बोल देते हैं शादी कर लो I do know that उनको मुझसे कोई और मकसद नहीं है but it's just that they want me to get settled but they have now learned to be less intrusive less you know push करना छोड़ दिया है उन्होंने बहुत ज़्यादा कि push करना शुरू कर देंगे नहीं कर रही है तो बाइकआउट कर दो उसका या कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है इतने एक्सट्रीम थैंकफुली the younger lot and the senior lot and मेरी एज की जो lot है they give me so much love शादियाँ होती हैं कुछ भी होता है one thing I want to like really add that my younger brother he's 9 years younger to me तो अब तो काफ़ी सिचुएशन बेहतर हो गई 3-4 साल पहले मुझे लोग बहुत पुश करते थे अम्मी की भी नई जो है उनकी भी डेथ हुई थी सो पीपल यूज्ड टू बी शादी सो माय ब्रदर वो एल्फी की तरह चिपका रहता था wherever I would go he would just be attached to my shoulder and I was like why are you even doing that he's like जैसे किसी ने तुमसे शादी का सवाल किया I will answer back because I knew that at that point of time even I was in the healing process और मुझे ये सवाल बहुत hurt करता था अब तो I'm like okay I'm used to it so I'm making other people in my family be used to it that it's okay if I'm not married it's not that I'm not
my father doesn't care about it. Like माँ बाप से ज़्यादा किसको फिक्र हो सकती है आपकी शादी की? Like so I have my father there, I have my siblings there, I have friends like you who were there. So but it's just that some things are just not in control. When it's meant to happen, it will happen. जब तक नहीं होता मैं खुश हूँ. That's what I want to tell everyone, that मैं खुश हूँ. इसमें बेया ट्रू एंड इसके लिए मैं हमेशा एक एडवाइस देती हूँ कि डेस्परेशन में आके और प्रेशर में आके हम लोग गलत डिसीजंस ले लेते हैं और गेट इनटू कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन एंड मैरी पीपल विच जो समझ भी शुरू में आपका गट बताता है कि ये नहीं जाएगा किसी डायरेक्शन में, लेकिन क्योंकि सोसाइटी और रिश्तेदार और माँ बाप का जब प्रेशर होता है तो आप ये डिसीजन ले लेते हैं. सो मैं हमेशा ये एडवाइस देती हूँ कि बजाय डिवोर्स बाद में आकर रहने के, उससे बेहतर है कि यू कैन एक्चुअली लिव एज अ सिंगल पर्सन. Quite true, because of course end of the day, if you're meant to be single, you are single, either a divorcee or not totally. Why not we get settled? married. Men can settle without getting married. Why not women? Yeah, it's because it's the society that's run by men, and that's what the problem over here is in Pakistan. That's what I'm saying. कि सब मशवरे देते हैं बाहर चली जाओ, तो ये इसी वजह से देते हैं because over here हमारा culture इतना advanced नहीं है. अभी भी ये एक it's a taboo topic for a girl being single and खुश रह रही है. Single भी है, खुश भी रह रही है. Like at times लोगों को ये अजीब लगता है कि यार ये खुश कैसे, क्योंकि शादी नहीं हुई भी तो क्या बेचारी. women to be Exactly. Why? भाई के टुकड़ों पे और Exactly. पड़े रहे कि भैया हम मजबूरी से Yeah, नहीं. this is the life that Allah has picked for me. He knows. We should accept it. He is there for me. I don't care about anyone. एंड नौशी यू नॉट अलोन. जो हम हमेशा बात करते हैं ना कि ये हमारी सोसाइटी और हमारे रीजन का इशू है. यस, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इस एरिया में हमारे इश्यूज डिफरेंट हैं, बट वेस्ट में भी ऐसे हैं. वहाँ पे भी औरत, इट्स अ वेरी नॉर्मल फीलिंग टू नॉट टू हैव चिल्ड्रन, नॉट टू बी मैरिड एटलीस्ट वंस और ट्वाइस. They are also facing the same thing, but then there is a lot of support system कि आपके ऊपर हैंग नहीं होता. But it's not that women as a person they don't go through with that missing part, and it's completely okay. It's completely fine. The first thing is कि जिस दिन हम accept कर लेंगे ना कि it's fine. Yeah. The way you said कि after a certain period of time acceptance बढ़ गई, कि रिश्तेदारों ने भी acceptance ले ली, भाई तुम्हारे साथ पे खड़ा होता है, your father is supporting you because you accepted it. Because the moment we accept the way we are, and that's the way forward. That's what it is. You just need to accept and of course go with the flow. This is what I tell people. That कोशिश हर चीज की नहीं की जा सकती है और शादी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. बस में होगा उतना ही करेंगे ना. तो Exactly. इसके लिए करेक्ट चाहिए होता है. औरतों के पास उसकी कमी होती है. मैं वही यहाँ पे यही बता रही होती हूँ. पाकिस्तान में मसला यही है that people don't take you seriously if you don't have a man in your house. I feel that I know a lot of females who do not have any female support system are living with their mothers. This is what they come back and they say that people take you seriously because you have a father and a brother with you. अगर तुम्हारे घर में ये दो मर्द नहीं होते तो लोग शायद तुम्हें तो seriously नहीं लेते. I had a lot of discussions with some of my friends, and one of my friends literally told me that he's like, कि ये जो तुम बदमाश बनी फिर रही हो ना, this is because you have these two people in your life. अगर ये नहीं होंगे ना, तो तुम तो बने बदमाश होगी, लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे because that's not, ये हमारा माइंडसेट खराब है यहाँ पे कि शादी नहीं हुई. And usually पहले तो मैं बड़े ये terms भी सुनती थी, leftover, not worth enough, और नखरे बहुत होंगे, headstrong होगी, stubborn होगी. I'm anything but that. She knows me more than a decade now. I'm anything but that. But it's just that कि ये हमने इसके पीछे वो बनाया हुआ है, एक सर्कल बनाया हुआ है कि अगर शादी नहीं हुई है तो यही मसले हो सकते हैं. मतलब something is natural as well. ये नहीं समझ में आते. अरे जो है ना, जो कहते हैं कि लोगों की तो सुनो ही नहीं. I can give you examples with over the period of time I experienced बड़े different angle पे कि जहाँ पर when I started living on my own, I had to move to Islamabad first. अब वहाँ पर just
अगर आप किसी लड़कों के साथ बाहर चाय पीते हुए या खाना खाते हुए नजर आए तो फौरन से हो जाता है कि ओ ये तो उसके साथ भी दोस्त है, उसके साथ भी जा रही है। और अगर आप नहीं किसी के साथ नजर आ रहे हैं, you just roaming around with your girls, they tag you differently, they don't leave you alone. So हर किसी के पास हर जगह पे कोई और कहानी होती है। Totally. एक और दफा हमारे मेरे दफ्तर के अंदर ही कि there was this girl who came, she was sexually harassed at her previous workplace. So she came to me for a job because I was always about women and women rights and helping other. Whoever comes to my table, मैं सबकी हमेशा कोई मदद करती हूँ। तो जो है मैंने अपने HR वाले को बोला जाकर उस इंटरव्यू के बाद कि हम अपनी भी पॉलिसीज चेंज करते हैं कि अगर ये हो रहा है तो हमारे पास भी बहुत सारी लड़कियां हैं। तो उसका पहला सवाल पता है क्या था मेरे साथ कि मैडम आपको कौन हरास कर सकता है? And I was like, just because I created this wall around me to protect myself because I was single that time, तो उसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई हरास नहीं करेगा। ये तो माइंडसेट है कि आप जो है ना आपके लिए कंप्लेन आ सकती है बट आप किसी को कंप्लेन नहीं करते। But again, that's what we do. We build a wall around us to survive, and then उस पे भी नहीं छोड़ते। तो भाई ये तो कभी So this is the thing is I started working very young. I was 21 when I started working, and this is it. तो अभी तक सब मुझे ये कहते हैं इससे बात करने से पहले 2 दफा सोचना पड़ता है घुमा के दे ना दे। I mean because I had to do it because I was very young when I started working. बसों में धक्के भी खाए। So I used to be that कि अगर बस में भी कोई बदतमीजी करता था ना तो मैं उसको सामने से वो अगर कोई घूर रहा होता था तो मैं घूर के उसको सुनाती थी, छोड़ नहीं देती थी कि क्यों घूर रहा है। But with time I've built up that aura again around me कि अब जो है ना लोग जरा सोच समझ के बात करते हैं कि मैंने trust me मैंने आज तक किसी को नहीं मारा but it's just but I really मुझे इतना होना चाहिए खैर। I think मेरे अंदर ये बिल्कुल आदत नहीं है। I'm just get so scared कोई मुझे घूर के देखे और लगता नहीं है मुझे देख के लेकिन I'm just get scared कि पता नहीं क्यों मैं वो हालांकि जितना मर्जी आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ये वाली चीज जो है ना I think this is very different. वो you just build it क्योंकि मैं हमेशा शायद एक तो मैं छोटी बहन हूँ और ऐसी protected oh nobody come near to me तो इसलिए मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि I'm very unprotected. Yeah, these elder sisters, you know, they have done a good job. So my elder sister, she जितनी मैं extrovert हूँ वो उतनी introvert है. But one thing she used to teach me जब मैं छोटी होती थी तो because I used to be very active इधर भी देख रही हूँ उधर भी देख रही हूँ और मुझे पता नहीं चल रहा होता तो लोग मुझे देख रहे हैं. I used to be a very careless person. So she used to teach me कि नीचे देख के चलो किसी को आंखों में आगे डाल के देखने की तुम्हें जरूरत नहीं है. And that one thing is right है. अगर मुझे रोड पे आप कोई भी सामने से आ रहा होता है मैं नहीं देखती. मैं बस नीचे देख रही होती हूँ मैं अपनी धुन में होती हूँ totally blank out. So a lot of people when they come and they meet me is like you know we were waving at you. हमने पीछे से आवाजें दी तुम बिल्कुल ही ऐसे जा रही होती हो जैसे कुछ सुन नहीं रही होती because this is what I am raised to do so because जरूरी है. अगर आप यहाँ पे सबको देखना शुरू कर देंगे people are going to come back to you और you know उनको लगेगा कि शायद कोई क्यों है यहाँ की आवाम ऐसी है. तो एक चीज पे हम तीनों अग्री करते हैं आज फिर कि जो है जब आप अपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं और हर चीज जो यू थिंक not as per the society, not as per to protect ourselves, to build something, तो वो एक example set हो जाती है, and then everybody behave according to that. Exactly, that's true. Yeah. That's Do true. we agree on this one? Yeah. Yes. Yeah. तो वर्क प्लेस में कभी प्रॉब्लम नहीं है तो इसको पास तो घर में कोई है ही नहीं ना जाने को तो उसको ज्यादा काम देना ऐसा भी कभी हुआ है? ऐसा होता नहीं मतलब आई वुड से कि पकड़ के इसी वजह से ऐसा होता है बट या एट टाइम्स ऐसी चीजें हो जाती है. शायद मुझे डायरेक्टली नहीं बोलना चाहता बट मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूं. दे हैव टू से कि घर पे हस्बैंड वेट कर रहे हैं या बच्चे रो रहे हैं या बच्चों को जाके देखना है. अब मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूं. अब्बू बैठे हुए मतलब यू नो आई डोंट हैव मच टू से. तो मुझे ये लगता है कि वहाँ कहीं ना कहीं खुद से एक नेचुरल डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाती है. Otherwise, I work for a workplace that is very female oriented. तो ऐसा कोई मसला ऐसा होता नहीं है कि because I'm unmarried तो मेरे ऊपर pressure ज़्यादा आए. So I really don't think. But yes, काम पे भी कुछ लोग होता है थोड़ा सा आपकी ज़्यादा दोस्ती हो जाती है तो you know they come back. मेरा काम कर नहीं शादी तो नहीं.
I mean, शादी क्यों इतना लेट की तुमने? And you know, like Faiza started, you're so pretty, you're so good looking, the male and the female both. तो क्या मतलब, क्या मसला था? अब भाई मुझे मसला पता अरे मैं बता देती कि क्या मसला, मुझे नहीं खुद पता ये मसला। तो रोशनी लाइन तो मारते होंगे सारे ने? नहीं मारते। Seriously? Yeah. I to be very बहुत ऊंची कर दी है। Yes. तो ऐसे लोगों डालती होगी तो खा लूंगी। ये ना मसला है कि मुझे like I really feel कि मुझे कभी ऐसी कोई चीज़ फील क्यों नहीं होती कि कोई मेरे you know someone is trying और to be very honest मैं जितनी अलूफ रहती हूँ सिचुएशन में भी बेचारा कोई पिट कर भी हो रहा होगा तो मुझे समझ में नहीं आ रही होती है but ऐसा किसी ने किया नहीं है but yes it's not that I have not been harassed there are people who have just tried to harass me and I had my own reactions to come back और फिर मैं सीधा करना जानती हूँ because this is a very thin line I'm a very frank person and my friends around my colleagues around they feel very comfortable around me but किसी की हिम्मत नहीं होती है कि कोई उल्टी सीधी बात करे so flirt तो बहुत दूर की बात है That's a good thing अगर ये सब चीजें नहीं हो तो लोग हमारा जीना हराम कर दें totally yes Yeah, as I said कि अगर आप नजर आए लोग कॉलीग्स के साथ घूमते हुए तो भी हम गलत हैं और अगर हम नहीं घूम रहे हैं तो भी तेरे साथ बिंदास। मजे की बात ये है कि विद टाइम मेरा वो फैक्टर भी खत्म हो गया है अब मेरे जो मेल फ्रेंड्स हैं they are all alhamdulillah married settled and to be very honest when I started my career my few of my male friends they literally helped me so much like I will not say कि भाइयों की तरह हेल्प की but they were their friends there my parents knew them मुझे रात में ऑफिस से लेट हो जाता था बसें नहीं मिलती थी तो my mom used to call one of those guys कि यार जाके उसको ले आओ ऑफिस से so I'm really thankful to those friends now मैंने वो भी एक स्टीरियोटाइप जो है वो तोड़ा है मैं कहूँगी कि because now if I'm sitting with a male सबको पता होगा या तो उसका कोई कोलीग होगा या इसका कोई दोस्त होगा और तो कोई होगा नहीं so I have no such problem my family is well aware of my male friends and my colleagues so you know they literally take care of me so मुझे ऐसा कभी feel नहीं होता so मैंने वो भी अगर मुझे कहीं में बैठी भी होती हूँ मुझे कोई मेरा family member like relatives या में कोई मिल जाता है so I'm totally chill now because I know कि उनके दिमाग में ऐसी कोई गलत चीज़ नहीं जाएगी कोई मेरे बाप को फोन करके ये नहीं बोलेगा कि नो तुम्हारी बेटी किसी लड़के के साथ बैठी my father would like yeah right ये इसके पता है किसी दोस्त या कोलीग के साथ होगी so I feel that मैंने वहाँ पे भी एक comfort area create किया So what's now? Nothing just going with the flow what life has to offer it's not that I've totally shut down all the doors if marriages yet to happen it will happen if it not then I have my own plans of working saving and then you know enjoying making up my own life And then we will retire together. oh yeah totally I'm waiting for that house in Antalya Oh yes the house by the beach. yeah the house by the beach Yes. So would you advise anything to our not really like advice नहीं है like we've been इसी के बारे में हम बात भी कर रहे थे so you know just accept the situation in a good way not in a bad way कि उसको accept भी करें और फिर उस पर रोते भी रहें traumas भी जिंदगी में बहुत आते हैं there would be times when even I'm depressed there are times that make me sad but then I'm like okay हो गई sadness now I have to just get up and go because this is what I have to do जब सब खुद करना है तो फिर तरीके से करना है so no I'm not going to say that I'm always a very happy person there are times very negative and I feel very negative and people around me usually get disturbed कि यार इसके साथ क्या मसला है but slowly and gradually I learn and I get up and I accepted my situation तो मेरी जो weaknesses हैं like Faiza says कि आपके सर पे crown होना चाहिए to make yourself feel like a queen so now what I've started is that वो weaknesses उठा के वो जो crown है ना मेरा उस पे मैं वो jewels लगाती हूँ and I'm just trying to accept तो आज हम एक नई टैगलाइन शुरू करते हैं आज से कि मैं बेचारी नहीं हूँ of course मैं नहीं हूँ हम भी कोई भी नहीं है हम कोई भी बेचारे नहीं है हम अपने आप को बना लेते हैं थैंक यू सो मच नाशिन इतना मजा आया आपसे बात करके same here likewise thank you so much for having me over and it was one fun show थैंक यू सो मच Thank you. अगर आपको हमारा चैनल में कमेंट करके जरूर बताइएगा and don't forget to follow us on Instagram.